Hi everyone, this is Naz Arora. Welcome back to my channel. Uh, I know I don't sound like my usual self. Well, there's a reason behind it. My dog passed away. Yes, his name is Mink. He's not just a dog. For you people, he's a dog. For me, he's my baby. I am. I've never shown my vulnerable side on my social media, but today I feel helpless. There's a reason behind this. On Sunday night, like Monday morning, basically, my dog started getting fits at 2:30 in the night. I wasn't sleeping with him, but our house help, he was sleeping in the same area as our house help. So our house help has been with us for almost 20 years now. She doesn't have a family, that's why she stays with us. She's our family now. So she came to my room, she woke me up and she was like, मिंक को दौरे पड़ रहे हैं क्योंकि उसको जेनेटिक है तो उसको आगे भी पड़ते हैं. बट मैं फटाफट उठ के बाहर आई. जब मैंने देखा उसको बहुत ज़्यादा फिट्स पड़ रहे थे. आगे जैसे उससे फिट्स पड़ते हैं कंपैरेटिवली उससे भी ज़्यादा. तो मैंने पहले उसको जो उसकी रेगुलर मेडिसिन हम देते हैं वो दी. देन मैंने उसको रेगुलर मेडिसिन देने के बाद एक सुपीरियर डोज हम देते हैं जो जब उसको फिट्स आ रहे होते हैं कुछ उन दिनों में 2-3 दिनों के लिए दी जाती है. और वो मेडिसिन ईजिली अवेलेबल नहीं होती, पर क्योंकि इसको पढ़ते हैं तो मेरे पास पड़ी थी तो मैंने दोनों दी. पर जब भी उसको फिट्स पड़ रहे हैं होते हैं तो अपना जॉ और ज़्यादा टाइटली क्लच कर लेता है. यू कांट ओपन इट, अदरवाइज आई कुड वेरी ईजिली ओपन हिज जॉ. वो बाकियों से मुंह नहीं खुलवाता था. सो व्हाट हैपेंड, आई ट्राइड ओपनिंग हिज जॉ. जैसे ही वो जॉ खोल नहीं रहा था तो उसको नेक्स्ट फिट आया तो मैंने कैसे भी करके उसके मुंह में मेडिसिन डाल दी वो वाली. सो ऐसे करते ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अराउंड हो गए थे. आगे 20 मिनट्स में उसके फिट्स ठीक हो जाते हैं. सो व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड कॉलिंग माई रेगुलर डॉक्टर जिसके पास मैं मिंक को लेके जाती हूँ. सो आई कॉल्ड हिम अप अ कपल ऑफ टाइम्स. आई go to 2 vets. So I called up the other one, he wasn't available. Then I called the second one. He picked up my calls after a good 5-10 minutes. Till that time I was looking for more doctor numbers online. My mother wasn't at home. Otherwise me and my mother, we together take care of the dog along with the maid and everybody else at home. But ज़्यादातर मुझे और मम्मा को पता होता है सब. So finally my doctor picked up. He told me he is not in town, he is in Karnal. So आप किसी और से उसको स्लीपिंग का सोने का इंजेक्शन लगवा लो ताकि उसकी बॉडी को रेस्ट मिल जाए, क्योंकि उसको उस दिन बहुत फिट्स पड़ रहे थे. और उसने मुझे बोला कि आप 24 आवर्स अवेलेबल हैं डॉक्टर्स, उनके घर चले जाओ उनको ऑनलाइन लेके. मैंने उनसे नंबर मांगा, उनके पास नंबर नहीं था. उन्होंने बोला आप ऑनलाइन देखो, उनका नंबर अवेलेबल है, कॉल कर लो. मैंने ऑनलाइन देखा, नंबर अवेलेबल था. मैंने कपल ऑफ टाइम्स कॉल किया उसको, उसने फ़ोन नहीं उठाया. और डॉक्टर्स को मैंने कॉल किया. मैंने अपने ब्रदर इन लॉ मेरे लोकल रहते हैं, मैंने उनको कॉल किया कि मुझे किसी भी डॉक्टर का अपने किसी फ्रेंड से नंबर लिख दो, क्योंकि मैं ऑनलाइन जिन नंबर्स पे कांटेक्ट कर रही हूँ वो फ़ोन नहीं उठा रहे. तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया. कई बार फ़ोन नहीं होता बंदी के पास, तो उनके फ्रेंड्स ने फ़ोन नहीं उठाया. एक ने उठाया तो उसके पास उसका डॉग मतलब सम रीज़न से उनके पास नंबर नहीं था. सो मैंने ऑनलाइन, मेरी सिस्टर ने सर्च करना शुरू किया. उनको भी मैंने कॉल पे बता दिया था तो उनको पता था, तो वो सर्च कर रहे थे. तब तक मैं और मेरे फादर अराउंड 3:15 तक हमने उसको मेडिसिन भी दी थी मिंक को सारी. हम उसको लेके गए डॉक्टर के पास 21 में. हमने उनके घर के बाहर जाके बेल मारी. आगे वो हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं. चंडीगढ़ में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेट.
and he charges a good sum also. So I was okay with paying anything. I just had to save my pet, my baby basically. So I kept ringing the bell outside their house. Nobody came out. Then I went to the government hospital for the vets. It was closed. Then I went to another vet. He was home, but he didn't help because it was his convenience. Then by the time the fourth doctor agreed to, पहली तो मेरे को चौथे डॉक्टर को भी मेरे को कॉल करके कन्विंस करना पड़ा कि सर उसको बहुत ज़्यादा फिट्स आ गया है, अब उसको देख लो, वो मर जाएगा. क्योंकि उसको मैं घर से 21 लेके गई, उसको ऑलरेडी बहुत फिट्स आ रहे थे. 21 to the third doctor when I went after going to the government hospital. He got continuous fits, guys. Continuous fits. From that third doctor to the fourth doctor, जिसको मैंने कन्विंस किया कि सर प्लीज़ इसे देख लो, उसने मुझे अपने घर बुलाया रात को 4:30 बजे कि चलो ठीक है मैं आपको देख लेता हूँ आपके डॉग को, अब मेरे घर आ जाओ, मेरा क्लिनिक यहाँ पे है. ही अग्रीड. वी वेंट बाय, क्योंकि उसको थर्ड डॉक्टर टू फोर्थ डॉक्टर में इतने फिट्स आ चुके थे that he died on the spot. वो मेरी लैब में था. ही डाइड गाइस. उसको फोर्थ डॉक्टर की बिल्डिंग में लेके जाना जाते थे. वो आर्मी बिल्डिंग में रहता था. सो बिल्डिंग के बाहर गार्ड होता है. गार्ड को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भैया वो मर जाएगा. मुझे लगता है वो मर चुका था तब, लेकिन मैं फिर भी एक चांस, हर बंदा अपनी फैमिली को बचाना चाहता है. मैंने उसको बोला कि मुझे गाड़ी के बिना मैं उसके अंदर लेके नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत, इतने शॉक्स के कारण वो स्टिफ हो चुकी थी, भारी हो गई थी बॉडी. और मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ. मैं इतने टाइम के बाद एक बॉडी नहीं उठा सकती. ऑलरेडी मैं उससे 1 घंटे से पकड़ के बैठी थी अपने पास. तो गार्ड मुझे कहता मैम नहीं, कुत्ता तो अंदर नहीं जाएगा गाड़ी में, आप उसको गोदी में लेके चले जाओ. मैंने उसको रिक्वेस्ट करके गाड़ी में बुला के उसे दिखाया. मैं कि ये मर जाएगा, मुझे प्लीज़ एक बार ही लेके जाने दे, मैं जब तक पहुंचूंगी वो मे भी मर जाए, शायद उसमें एक आध कोई सांस बाकी हो. So finally he agreed. But when I reached the house of the fourth doctor, I took him in. The doctor was, मुझे लगता है उनको देखते पता चल गया था कि मिंक मर गया है. अंदर से मुझे भी पता लग चुका था, क्योंकि मैंने उसकी आंखें, उसकी आई बॉल रोलिंग सब बंद हो गई थी. तो जब मैंने फोर्थ डॉक्टर को उसको दिखाया, उसने बेचारे ने बड़े इंजेक्शन मार के उसकी बॉडी में ट्राई करा, कि हार्ट पंप करने की ट्राई करी, बट इट वॉज टू लेट. सो इन शॉर्ट, ह्यूमन नेग्लिजेंस एंड इनह्यूमैनिटी. हम बोलते हैं कि नहीं ये रूल है, रूल बेंडेबल होता है, लाइफ बेंडेबल नहीं होती गाइस. कोई भी आपके फैमिली के साथ ऐसा करे, नहीं होना चाहिए. मेरे घर पे सारे कहते थे आई लैक इमोशंस बिकॉज आई फील वेरी लेट. मुझे जल्दी फीलिंग नहीं आती बिकॉज आई हैव हैड माई इश्यूज इन द पास्ट. And that's why I don't talk a lot about emotions or anything. So, जब हम थर्ड डॉक्टर के घर के बाहर खड़े क्वेश्चन आंसर खेल रहे थे, वो मेरे से पूछ रहे थे आप कहाँ से आए इतनी रात को, ये वो फलाना ढमकाना, आपके डॉग को हुआ क्या है. उनके घर के बाहर खड़े खड़े मेरे बेबी को इतने फिट्स आए. फिर मुझे लगता है जब मेरी लैब में था, थर्ड डॉक्टर से फोर्थ डॉक्टर के जाने पे, ही डाइड. हिज टंग turned from pink to blue to black blue. उसने बहुत स्ट्रगल किया, tried really hard to live.
because he struggled for 2 hours with those. Earlier I'm able to count the number of fits one person gets. Like my dog used to get. We used to get around 4 to 5 fits. But that day he got around. I forgot the count. But I guess within 2 hours he got 50 fits. He died. I'm short of words. I'm in utter pain. My family is in a lot of pain, especially my mother, because even I used to go out of my house for work. But he was always around, my mother. I want to say one thing. All these vets that I went to, all of them are 24 hours available as per their description online. And these were not the only people I contacted. Apart from these 4 vets, I called around 15 people. My sister called separate people. My brother-in-law called separate people. Right? These were the 4 I visited at 3:30 in the night. I was ringing their doorbell to save my baby. But and the tragic part is they live in the same building where their vet clinic is. So it's not that they are not available. They're available because they are running their business during the day. Just because it's 3:30 at night, doctors are some like they are necessary service for a for every person. So they cannot shut their clinics. They are 24 hour available. अब तो इनमें से किसी ने मेरी हेल्प नहीं की. मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर गया. मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि मैं कितनी पेन में हूँ. हर बारी जब उसका कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, आई डोंट नो it's like a karmic connection or something. I'm always with him. Either I'm behind him or I'm walking by his side. This is just inhuman behavior. I want to say that. I would never want to cry again on social media for anybody. But this is a big loss to me. He died at 4:30 in the morning. I don't remember the time because I wasn't watching the watch. I was preferring just going from one doctor to another. I don't know when he died. But I could feel it by the time I reached the 4th doctor. He died because I saw his eyes. He stopped breathing. I don't know how I will be able to recover. This pain is unbearable. Everybody has their life circumstances. I've gone through mine. I've had a tough life. I've never had it easy on anything in life. And that's why I'm just emotionally strong. But this hasn't helped me here. I've gone, like in the past 24 hours, around my house, I can just see Mink everywhere, sitting in every corner, wagging his tail. He used to come every night to, get a massage on his head from me. I just want to say that all these vets treat dog as a dog. They don't treat them as living being, or rather any animal. उनका रोज का काम है, तो I don't know वो इम्यून हो चुके हैं या इनह्यूमन है. पर मेरे हिसाब से वो इनह्यूमन है, क्योंकि जब मैं 15 डॉक्टरों को ऑलमोस्ट कॉल कर रही हूँ, जिनमें से 4 को मैं पर्सनली विजिट कर रही हूँ, अगर वो मेरे किसी काम के लिए, तो मेरे लिए सब यूजलेस है. मेरे लिए इनह्यूमन लोग हैं वो. मेरे घर पे सारे लोग हैं अभी, पर मेरे मिंक की कमी इतनी ज़्यादा है कि मैं बहुत पेन में हूँ इस टाइम. मैं अपनी पेन एक्नॉलेज नहीं करती कभी भी.
किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं. And around 1,15,000 people, 100% I would have never expressed it. But I wanted to create awareness about this inhuman behavior that we all have. I think my dog is in a better place now. I haven't been able to stop crying in 24 hours. I'm not feeling anything. I'm just missing him terribly. I'm sorry, guys. You must be thinking it's a long video. But it's something you should be aware of. People are not doing good to the society. The vets are so bad. They are essential service, but not available. I just hope he's resting in peace. I have all the good memories with him. He has been the most loving creature I know. Only mine. He's the cutest dog. I don't know who to take out for a walk with me now. I don't know who will come wagging his tail to just meet me. I was in Ludhiana last week. My grandfather was very ill, like terribly ill. He was in ICU. So I'd gone to see him. So my pet was staying at home with my sister. She came from her in-laws just to see him. And she went that evening जिस दिन मैंने वापस आना था लुधियाना से. So he knew before I came to the door. He was sitting on the door waiting for me. His tail was wagging. He met me like a maniac. I missed him terribly, but we were not in a situation where we would handle another person. My grandparents needed me. They're very old. So I went to help them. My grandfather had amnesia. He lost his memory. So we were not in the place where we could take him along with us. Otherwise, he always travels to my grandparents' house with me to Ludhiana. So it was like, it's very rare that I leave him. Now I don't even have that. But I don't leave him generally. So he was wagging his tail. He met me amazingly. Even the night when he passed away, few hours before that, 3.5 hours before that, he was sitting in my room looking at me to feed him. मिंक मेरे पास 4 साल रहा है. 4 सालों में जब मैं उसको लेके आई थी फर्स्ट बिगिनिंग में, within 1 month, I got so affectionate towards animals and dogs that I started feeding. We have around 8 to 9 stray dogs in our lane where I live. So I started feeding all of them. I used to feed them everything जो मैं मिंक के लिए रखती थी, like pedigree, sometimes biscuits like Mary and all that. अब मैं बिस्किट भी खाती हूँ. वैसे तो मैं खाना नहीं खा पा रही उसके कारण, पर अगर मैं बिस्किट भी देखती हूँ मुझे सिर्फ मिंक आता है, मुझे कुछ और याद ही नहीं आता. I'm still feeding the animals outside, but there is a lot of void inside me, which I don't think anybody can understand. I would never like to cry on this platform, but I think it was, as a human being and as an influencer, it was my duty to make you guys aware of the inhuman behavior that because of which I lost my kid. Nobody can fill that void. They lacked on their duties.
but I lost my family. My other family members, everybody is shattered. I think it was time for me to make you guys aware of these kind of people. So, and for my friends and everybody who know all this and who are texting me that they'll pay, they you should press charges against them. I just want to say one thing. I don't believe in the justification that the human system does for people, the courts do. I believe in the justification system of the Almighty. So I will not like to say it, but he will be punished, but in the right way, not like the way we humans want to do it. He will be punished the way God wants it. And I think that would be the best kind of punishment. So don't send in these suggestions. I don't want them. I have my own belief in the justification that God does. So let it be. And I wish my child rests in peace. You guys have always seen him on my Instagram stories. But I'm just telling you, please take care of all your pets or the animals around, the voiceless beings. Thank you. I don't think I can speak more on this topic, but please be aware. Thank you for watching, guys. Please share it. This is not something where I'm promoting a brand or anything. I'm just talking about the inhuman behavior that we humans have. I feel bad being a human today. I feel my dog was way more better than any human present. So yeah, I wish this earth becomes a better place. And thank you guys for all your support and all the messages that I've been getting. Just pray for him. I have nothing to say. Thank you.